5/12/21 को रात के 12:20 पे मुखबिर सूचना मिलती है कि एक तेंदुखेड़ा तरफ से एक अर्टिगा गाड़ी आ रही है जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हैं, गांजा लेकर जा रहे हैं, ऐसी सूचना मिलती है। हमने मुखबिर सूचना का पत्र बनाया 5/12/21 को 12:20 पे। उसके बाद मैलोड टीम तैयार हुई और टीम के बाद मैलोड मुखबिर सूचना प्राप्त हुई। इस बाबत हमने 2 गवाहों को सूचना दी, उसका पंचनामा बनाया। 2 गवाह हमारे थाने में उपस्थित हुए, उनके साथ हम लेके टीम के साथ वरिष्ठ से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कि सर्च वारंट हमको मिल जाए, पर नहीं मिलेगा, इसलिए साहब सर्च वारंट न प्राप्त करने का पंचनामा बनाया 12:50 पे, क्योंकि गाड़ी तेजी से जा रही थी और सर्च वारंट प्राप्त करते समय वो समय लग जाता निकलता था 12:50 पे। मैलोड देर आफ्टर मैलोड इनको 1:20 पे बस स्टैंड में हमने इनकी गाड़ी सहित रोका। बस स्टैंड तेजगढ़ में 5/12/21 को रात के 1:20 पे 2 पंचों के सामने हमने उपरोक्त पंचों के समक्ष मुखबिर सूचना के अनुसार अर्टिगा क्रमांक MP34 CA 9211 को रोककर उनमें बैठे व्यक्ति नंबर 1 सरमन पटेल, नंबर 2 लकी रजक, मोहल्ला स्वयंसो अपना नाम समक्ष गवाहों बताया, जो दोनों व्यक्तियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराया और बताया कि हमें संदेह है कि आपके वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा है। पंचनामा तैयार किया गया। देयरआफ्टर माय लॉर्ड 1:35 में ये जो बता रहे हैं कि थाने में जो स्वयं एवं हमराही स्टाफ गवाहन की तलाशी पंचनामा, ये थाना परिसर तेजगढ़ में, ये वहां से इनको लेके आए गाड़ी सहित। माइलॉर्ड हमने अपनी पुलिस वालों ने अपना स्वयं का ये तलाशी दिया है सर माइलॉर्ड 135 पे जो है 1:35 पे तलाशी देने वालों का नाम है उप निरीक्षक ब्रिजेश पांडे, सहायक उप निरीक्षक DP साहू, आरक्षक 754 संकेत तिवारी, आरक्षक 760 संतोष कुमार और लल्लू उर्फ सुरेंद्र बर्मन और रामजीलाल सोनी, ये दोनों गवाह थे। तो इनके सबके ये स्वयं के तलाशी पंचनामा बना और इनके सामने ये दोनों जो अभियुक्त पकड़े गए इनको तलाशी पंचनामा की तरह हमने दिया कि आप हमारा तलाशी ले सकते हैं। देयरआफ्टर माय लॉर्ड 2:05 पे जामा तलाशी दौरान वस्तुओं का जो पंचनामा हुआ वो कंटिन्यू चलता रहा और 2:05 में फाइनल हुआ कि कुछ उप निरीक्षक ब्रिजेश पांडे के जेब से 1000 रुपए मिले और एक अन्य सब इंस्पेक्टर के जेब से 1500 रुपए मिले। इस तरह से माय लॉर्ड सेक्शन 50 का कंप्लायंस हो गया। एंड अब माय लॉर्ड एज पर द सीजर माय लॉर्ड थाना परिसर तेजगढ़ 4:20 जी 5/12 को जिससे संपत्ति जब्त हुई सरमन लाल पटेल लकी रजक समक्ष गवाहान पृष्ठांकित के आरोपियों के वाहन क्रमांक स्वयंसो अर्टिगा में कुल 44 पॉलीथीन के पैकेट जिन्हें समरस करने पर कुल वजन 40 किलो 110 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 4 लाख रुपए सफेद प्लास्टिक की बोरियों में भरकर जिन्हें क्रमशः प्रदर्श A1 A2 A3 चिन्हित कर कुल मात्रा में सैंपल है 500 ग्राम के 2 पैकेट A4 A5 निकालकर एवं वाहन क्रमांक MP34 CA 9211 अर्टिगा कीमती लगभग 10 लाख रुपए सफेद रंग चालू हालत में वजह सबूत जब्त किया। पुलिस लिया प्लास्टिक की पॉलीथीन में 40 जो लाल पीली नीली हरी व सफेद रंग की है जिनमें पहले से गांजा भरा हुआ। समरस करने के बाद खाली पॉलीथीन समक्ष गवाहन उपरोक्त के जब्त करने की पुलिस कार्रवाई की गई। मैलोट समरस पंचनामा है तीन 3:05 का 5/12/21 का मालूम जी जो सैंपल समरस किया गया माइलॉट उसी से फिर 2 A4 A5 जो सैंपल माइलॉट FSL के लिए भेजा गया। जी FSL में वो गांजे की पुष्टि आ गई है। ये जी
7/12/21 को FSL रिपोर्ट इज डेवलप्ड, उसमें गांजे की पुष्टि हो गई जी। That is the matter of conscious possession, my lord, and present applicant is a driver of the vehicle, my lord, and जो बाजू में बैठा था अदर को accused, my lord, सरमन लाल पटेल. ठीक. Anything else? No, my lord. लिखिएगा. This is Sri Sandeep Jain, learned counsel for the applicant Lucky Rajak. This is third bail application on behalf of the applicant Lucky Rajak, son of Kashiram Rajak, under section 439 CRPC. Next case, crime number 395 of 2021, is registered at police station Tejgarh, district Damoh, for offence under section 8 of the 20 of NDPS Act 1985. Applicant is in custody since 5/12/2021. Next para. Earlier bail applications were dismissed on 22nd March 2022 as withdrawn, and second bail application was dismissed for want of prosecution on 13 May 2022. Next para. Shri Sandeep Jain submits that two of the prosecution witnesses, namely Ramji Lal Soni, he was a witness of seizure, and Shri Parasram Yadav, Raja Ram Yadav, son of Parasram Yadav, another witness of seizure, have been examined before the learned special judge NDPS at Damoh. Next para. It is submitted that there are several inconsistencies in the seizure. Full stop. The first issue which is raised is that under similar facts and circumstances, a coordinate bench of this court granted bail-wide order dated 16th November 2022 in MCRC 50853 of 2022, wherein quantity was of 60 kgs of ganja, whereas in the present case it is about 40 kg. Full stop. They submitted that petitioner applicant has a better case than that applicant, namely Jeevan Ahirwar, who has been enlarged on bail by a coordinate bench. Next one. Similarly, reliance is placed on another decision of a coordinate bench passed in MCRC 31422 of 2000 better footing, and therefore should be considered liberally. Next para. Reliance is also placed on order of Gwalior bench of this court in MCRC number 19405 of 2022, dated 19/4/2022, wherein after taking note of the decision of High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow bench in criminal miscellaneous bail application number 9660/2021 ब्रैकेट में ओम प्रकाश वर्मा एंड स्टेट ऑफ एमपी, standing order. Next pair. Reliance is placed on the judgment of Samiullah versus Superintendent Narcotics Central Bureau 2008 ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज 16 SCC 471, and reading from this, it is submitted that
Supreme Court in Kuldeep Singh versus State of Punjab 2011 CRLJ 2672, wherein it is held that if samples are not taken by the SHO at the time of seizure, but bags were carried to the police station, then that would vitiate the sampling, initial stage of sampling, and conviction of accused is liable to be set aside. Next pair. Shri Manasmani Verma, learned counsel for the state, in his turn, submits that information was received on 5/12/2021 at about 12:20 am. Full stop. On the basis of the said Mukbir Suchna, a Panchnama was drawn. Full stop. When it came to the knowledge of the concerned police official that a Ertiga car is traveling with contraband, then instead of taking permission from the superior officers, another Panchnama was prepared due to paucity of time, and then search was carried out, in which 40 bags of ganja were recovered from the car, that is from the conscious possession of the present applicant and co-accused who was traveling in the car. Full stop. There is no error in the sampling process, and contention of the applicant's counsel that mixing of the contraband and then drawing a sample is violative of the statutory circular issued by Union of India is not made out in the present case. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, coordinate bench of this court at Gwalior has quoted relevant provisions of the standing order number 0 लगा दिया, ये पूरा कोट कर दीजिएगा, आप वहीं रखिए. Contents of each package given identical results on color test packages / containers is permissible even by the standards of the standing order number 01 of 1989. Thus, this bunching and drawing of sample being not contrary to the standing order cannot be put to question by the learned counsel for the applicant, as he has stated